All right. Hello, everyone, and Assalamu alaikum. My name is Syed Basiruddin, and I'll be the host for today. I am Beta Microsoft Learn Student Ambassador from UIT University Karachi, formerly known as Osman Institute of Technology. Joining us today as a speaker is Mr. Asharib Ahmed. He will be talking about GitHub Codespaces after the watch party. So stay tuned. The meeting is being recorded. Make sure you stay connected throughout the meeting. We'll uh, we'll have a giveaway of a cool GitHub hoodie at the end of the session through lucky draw. So make sure you stay connected. Only those participants will be considered for it who stay connected throughout the session. So with that being said, let's start the watch party. Everyone. First, do let me know. Am I audible for all of you guys? Just write it in the chat. Can you hear me? Okay, great. So, first of all, let me introduce myself. This is Asharib Ahmed here. I am currently working as a data scientist at Star Marketing Private Limited, and also one out of six GitHub campus expert from Pakistan. Okay, so before going to the GitHub code spaces, I just want to know, okay, how you guys are feeling today. Like, we have listened so much, and like so many features are coming out. So, how you guys are feeling about this? Okay, what you are expecting GitHub to be in the future for developers? Just want to know. Acha, in the meantime, I also want to share my experience like with GitHub. क्योंकि as we all know, GitHub is acquired by Microsoft. So when it's come to Microsoft, we are not really expecting, like particularly myself, मैं इतना कुछ expect नहीं करता Microsoft से, because Microsoft is not doing so well at this point of time. This is why this is, and I also think Bill Gates, from the very start, he did amazing job. He built Microsoft, or at that time, we all know Bill Gates for like for more than 5 years he has been on the first place in the world richest man. Lekin this is the only reason for Bill Gates to come down. कि उसने कुछ ऐसा impactful नहीं किया. Now Elon Musk is on the first place. लेकिन Bill Gates or Microsoft itself is not like doing so good. But when it's come to GitHub on LinkedIn, they are like really creating an impact. क्योंकि GitHub को मतलब, even if you talk about any feature of GitHub, they are like really making a life of a developer easy. अगर आप code spaces की, we will definitely talk about it. लेकिन other features like GitHub Actions हो गए, like GitLab is also doing the same thing, और उसमें कुछ ज़्यादा features भी हमारे पास होते हैं, लेकिन when it's come to GitHub, वो इतना इजी होता है GitHub एक्शंस को क्रिएट करना. लाइक पहले आई स्टिल रिमेम्बर कि इन स्टार मार्केटिंग आई also work with the backend team and DevOps team. तो हम लोगों को, and I am like really good at Amazon web services. तो जब हम लोगों को कोई भी अपना GitHub का कोई भी इंस्टेंस या फिर कोई भी वर्जन अपडेट करना होता था हमारे डेवलपमेंट का, तो हम लोग यहाँ से पुश करते थे उसको, सेट करना उसकी नई डिपेंडेंसी सेट करना AWS के ऊपर, EC2 इंस्टेंस या सर्वरलेस के ऊपर हम लोग डिप्लॉय करते. तो वो इतना हेडेक होता था कि आपको एक एक पहले वेरिएबल सेट करना है, फिर आपको उसको डेवलपमेंट से पूरा प्रोडक्शन पे कन्वर्ट करना है, और ये सारे स्टेजेस को अलग अलग मेंटेन करना है. एट द सेम टाइम आप ये चेक कर रहे हो कि आपके डेटाबेसेस अलग है, आपके डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अलग है, आपकी हर चीज अलग है. लेकिन व्हेन इट्स कम टू गिटहब एक्शंस, हम लोग ने जस्ट एक उसकी जगह फाइल राइट कर दी, और हम लोग ने सारी इंस्ट्रक्शन वहां पे आके लिख दी, एंड we are not supposed to do anything. बस हम लोग कमेंट करते हैं और उसको पुश करते हैं, and it will be directly deployed on a AWS within like seconds or something. और वो आपको सारे लॉग्स भी दिखा रहा होता है. आपको पर्टिकुलरली जाके AWS वॉच पे आपको सारे लॉग्स नहीं देखना है. यू कैन सी द वॉच ऑन योर GitHub डेस्कटॉप और समथिंग. तो ये वो फीचर्स हैं which is really, और like GitHub Copilot,
To be very honest, in my company, we are having a like team of 11 developers, and each of us are producing GitHub Copilot just a day from its published and it's out from the beta version. Literally, मतलब हम लोग बस पे lines of comment करते हैं कि we want this feature literally, और वो हमें पूरा कोड लिख के देता है, और उस पे सिर्फ एक हमारे पास कोड के ऑप्शंस नहीं आते, उस पे हमारे पास पर्टिकुलर 10 to 11 ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि आपको यही एग्जैक्टली सेम कोड same functionality मिलेगी with different type of boilerplates. So they are like literally doing it, and I'm so much impressed. Not just because I am a GitHub campus expert, but really, it's really creating an impact. So this is a brief review from my side about what we have heard today, and I'm like literally expecting so much from GitHub in the future. So let's dive into the. Let me share my screen first. Okay, which screen? GitHub Microsoft Team. Oh, give me a minute. GitHub Brave, yeah. So do let me know if you folks can see my screen. Is my screen visible for you folks? Okay, great. So sorry, actually I'm not feeling well though. Okay, so GitHub Codespaces. So whenever first of all, if you are a developer and you're not having a GitHub account, you're not supposed to call yourself a developer, because we also do recruitments here, or like and any place like Google, Microsoft, like you can call any FANG company. So they will definitely not ask you about your portfolio, okay, what certification that you have. They will ask you, okay, what you have built so far. For example, like a couple of days ago, I was filling out the MLS fellowship program, उसके लिए apply कर रहा था, and they directly asked me कि what you have built, or you are supposed to, like I was supposed to share a GitHub repository with them कि मैंने क्या बनाया है, उसमें क्या है. So nowadays, और हम लोग भी जब यहाँ पे स्टार्ट मार्केटिंग के अंदर रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, we don't literally ask about any certification or और उनके मतलब कहाँ से पढ़ा है stuff. We directly ask them कि what you have built, have you worked on this, and the best way to present yourself, to portray yourself is not कि आपने उनको thoroughly बताया कि आपने ये किया है. Just show them, and this is a like really great impact to your recruiter. Okay, so first of all, if you are not having a GitHub account till now, so I do encourage you all folks कि just create it. Although आप उस पर कुछ ऐसा I am not asking you right now कि आप उस पर आके like directly इसके लिए projects बनाना शुरू करते हैं, but just having an account is like more than enough for at this point. Okay, so when it comes to GitHub Codespaces, before jumping into this, I wanna introduce another feature of GitHub, क्योंकि मोस्टली GitHub को हम लोग जानते हैं उसकी रेपोजिटरी के हवाले से, राइट, और ओपन सोर्स के हवाले से, बट GitHub contains a tons of feature, like they are numerous features and they are like really amazing. तो GitHub Codespaces को समझने से पहले you need to understand what GitHub Dev is. Okay, so before going to the solution, I will introduce a problem what GitHub Dev is solving. So this is my repository. All my repository, I am having 69 repository, and yeah, do follow me on GitHub if you are not doing right now. So as a backend developer, मैं या फिर any developer, आप क्या करते हैं कि आपने most of the time you are like creating a architecture और like एक structure बना लेते हैं जिस तरह से आप कोड करते हैं, या फिर कुछ कोड ऐसे होते हैं like जो functions होते हैं utilities के अंदर, जो कि आप डायरेक्टली बार बार उनको exactly हर प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैकएंड डेवलपर और अगर आप किसी भी बैकएंड फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं, तो एक ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन, ये और लॉगिंग और यू कैन से लाइक कैश मैनेजमेंट, ये ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि आप बार बार यूज कर रहे होते हैं हर एप्लीकेशन के अंदर, रिगार्डलेस आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. ये कुछ फीचर्स है जो आपको यूज करने ही करने हैं. तो यू आर नॉट अगेन एंड अगेन राइटिंग इट फ्रॉम द स्क्रैच. आप एक बार बनाते हैं, आप उसको अपनी रेपोजिटरी में रख लेते हैं और देन यू आर कॉपिंग इट. तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इन ऐप करेंसी एप्लीकेशन है व्हिच इज डेवलप्ड ऑन अ Nest.js.
अब मैं भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था विच इज लाइक इंटरनल प्रोजेक्ट ऑफ शाह मार्केटिंग। अब मुझे इससे उसका लाइक बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, तो मुझे इसका ना ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट और इसका कैशिंग वाला पार्ट कॉपी करना था। तो अब मैं क्या कर रहा था कि मैं पहले, अगर हमारे पास गिटहब टैब नहीं होता तो मैं क्या करता कि मैं पहले इसकी जाता मतलब रेपो के अंदर ओपन करता, उसके बाद इसकी एक फोल्डर के अंदर जाता, देन मैं इसके मॉड्यूल्स के अंदर जाता, एंड देन आई एम लाइक मूविंग थ्रू अ डायरेक्टरीज के मुझे जिसमें जाना है, उसके बाद आके मैं डॉक्टर उसमें आउट ऑफ सर्विसेज के अंदर जाता। तो इस तरह करके मुझे इतनी लंबी हायरार्की कवर करके फिर मुझे आके मुझे कोड मिलता है, देन आई कॉपी, उसके बाद मुझे दूसरे पे स्विच करना था, देन आई गो बैक, और उसके बाद आके फिर मुझे किसी और डायरेक्टरी के अंदर जाता, किसी और फाइल को ओपन करता। तो ये हमारे पास एज अ डेवलपर वी आर लाइक वी वांट अ टूल टू सेव आवर टाइम्स। तो एट दिस पॉइंट अगर मैं क्या करूं, मैं आई एम जस्ट राइट हियर and I will click a pointer key on my keyboard. Just wait and watch what will happen. Okay, so it's github.dev is initializing. It initiate a VS Code on my repository, and how amazing it is. Like, और ये just वो नहीं है कि आपको इसमें repository खोल के you feel uncomfortable. This is exactly the thing that I am using in my laptop. और अपने डेस्कटॉप के अंदर, लैपटॉप के अंदर जो मेरी VS कोड के ऊपर जितनी भी सेटिंग्स है वो डायरेक्टली इस पे इसमें सिंक कर दे। अब I can directly jump to any file because it's my VS Code, right? और मैं इस पर पर्टिकुलर फाइल्स खोल सकता हूँ, इसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ, इसको कमेंट कर सकता हूँ। अब मुझे एक पर्टिकुलर अलग अलग फाइल्स के अंदर जाके राउट करने की जरूरत नहीं। आई कैन डू एनीथिंग आई कैन डू ऑन माई VS Code. Now I can also do a development on this, but I can't run the development part क्योंकि मैंने इसके अंदर मेरे पास कोई VPS virtual private cloud या फिर virtual machine connected नहीं है. This is just a VS Code which cannot execute anything. So this is where a Codespaces comes in. But before going to a Codespaces, I want to introduce also like other feature of GitHub.dev and how amazing it is. So, for example, let me just go to my repository again. So here it is. So मेरे पास जो मेरी in cache application है, इसके ऊपर ही I created a pull request last night. Okay, I did some modification. Okay, अब मुझे इसकी अगर modifications देखनी है, and which is a really hectic task literally, क्योंकि as a DevOps engineer आप लोगों के पास मल्टीपल डेवलपर्स होते हैं, दे आर लाइक लिटरली वर्किंग ऑन वेरियस मॉड्यूल्स ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो उस पे उनकी जब आपको मर्ज करना होती है ना, जब जहाँ पे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो उनको रिजॉल्व करना है गिटहब डेस्क ब्राउजर के ऊपर आपके। इतना कोई हैक्टिक प्रोसीजर होता है कि आप लोग एक एक लाइन को जाके उसको रीड करते हैं, फिर उसको रीड करने के बाद उसको लिटरली रिमूव करना पड़ती है, क्योंकि गिटहब एक्सटेंशन आपके पास अगर आप अपने VS कोड आपने अपने मशीन पे खोला तो वहां पे आपके पास एक्सेप्ट चेंजेस या एक्सेप्ट इनकमिंग चेंजेस या एक्सेप्ट करंट चेंजेस का ऑप्शन आ रहे होते हैं, लेकिन गिटहब डेस्कटॉप गिटहब के ऊपर इस तरह नहीं होता। वहां पे आपको लिटरली एक लाइन को गो थ्रू करके उसको रिमूव करना पड़ता है, जो कोड आपको चाहिए उसको रखना पड़ता है। बट इफ यू आर ऑन अ गिटहब डेव, आई विल जस्ट, अगर मुझे यहाँ पे चेंजेस देखना तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, लाइक व्हाट्स द चेंजेस, एंड देन आई कैन लाइक कि लास्ट कमेंट क्या था, उस पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं स्टफ। बट if I am here and I will press again a pointer key, it will open a VS code, but it will direct me to the pull request and it will show me what's the changes here on my screen. Just give it a second. Okay, so it's loading. Here it is. Yeah, here it is. So basically it's showing this is what it was before and now it is seems like this. It is like a particular file, और बाकी मैं डायरेक्ट चेंज कर सकता हूँ कि मतलब क्या क्या चेंजेस हुई हैं, किसको मुझे रखना है किसको नहीं रखना, एंड आई कैन लिटरली एक्सेप्ट द चेंजेस हियर, क्या कमेंट है, व्हाट्स द मतलब इसके अलावा लाइक सिर्फ इस अगर इसमें भी आप एक ही पुल रिक्वेस्ट में मल्टीपल कमेंट्स है तो इट कैन शो ऑल द कमेंट्स हियर। लाइक हाउ अमेजिंग इट इज लिटरली, लाइक ये जो the tools that I am talking about till now, we are literally using this as a developer at everyday life, और ये हमारे पास like
as in the mentioned in the keynote के GitHub Copilot और जो competition होता है उन्होंने 55% time बचाया था, and like this is literally the true क्योंकि we are using it on our daily life and it's making our life easy. So this is what GitHub Dev is. Before jumping to the GitHub code spaces, do let me know if you are having any question. Okay, what's the difference between GitHub and GitHub? Okay, and so GitHub is basically a repository where you can push your code and like you can contribute in the open source. और गेट जो है हमारे पास वो वर्जन कंट्रोल है. फॉर एग्जाम्पल वर्जन कंट्रोलिंग क्या होती है कि आपने आज एक काम किया अपनी फाइल के अंदर, लाइक यू आर बिल्डिंग फॉर एग्जाम्पल a to do application on any framework. Okay, so आप एक दिन आके काम करते हैं, आपने कुछ डेवलपमेंट किया, आप अगले दिन आए आपने दूसरे मॉड्यूल पे काम किया, आप तीसरे दिन आपने तीसरे मॉड्यूल पे काम किया. नाउ ऑन अ फोर्थ डे योर टीम लीड इज आस्किंग यू कि तुमने जो पहले दिन काम किया था वो मुझे दिखाओ. ठीक है, दिस इज द वन सिनेरियो. सेकंड वन इज कि आपने फोर्थ टाइम कुछ ऐसी चीजें कर दी जिसको आपको अंडू करना था. लाइक आपने एक्सीडेंटली कोई मॉड्यूल पब्लिक वो कर दिया, ऐसी जगह ऐड कर दिया जो कि आपने उस मॉड्यूल में नहीं करना था, आपने किसी और मॉड्यूल के अंदर वो फीचर लिखना था, वो फंक्शन लिखना था. तो अब होगा क्या कि आपको दोबारा से यहाँ से सब चीजें इरेज करके आपको दोबारा स्क्रैच से लिखना पड़ेगा. लेकिन व्हेन इट्स कम टू गिटहब गिट, आप उसको वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली अपने जो आपने फर्स्ट डे काम किया था आप उस पर स्विच कर सकते हैं, जो आपने सेकंड डे काम किया था आप उस पर स्विच कर सकते हैं. तो ये इसके अलावा एक ये हो गया. सेकेंडली यू आर ऑल्सो हैविंग ब्रांचेस, और यू कैन से कि ऑब्वियसली इफ यू आर हैविंग अ लार्ज स्केल कंपनी तो आप उस पर अकेले काम नहीं कर रहे होंगे. यू आर हैविंग अ टीम मेंबर्स, यू आर हैविंग लाइक योर सीटीओ जो कि उसको जिसको हर चीज का एक्सेस होगा, और आपके पास उसके कुछ डेव्स होंगे जिनके पास एक मॉड्यूल का होगा, कुछ डेव्स होंगे जिनके पास दूसरे मॉड्यूल का एक्सेस होगा. तो आप के ऊपर आप ब्रांचेस बना सकते हैं कि कुछ लोग जो होंगे उनको सिर्फ ये वाले मॉड्यूल की कोड का एक्सेस होगा और वो उसी पे काम करेंगे. दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ कि इसमें कोई दूसरा मॉड्यूल भी एग्जिस्ट करता है, उनको सिर्फ उसी ब्रांच का एक्सेस होगा. सेकेंडली दूसरा वाला जो बाकी डेवलपर्स है उनको फर्स्ट ब्रांच का नॉलेज नहीं होगी, और इन सब ब्रांचेस का एक मास्टर होगा, मतलब जो आपका टीम लीडर है, आपका सीटीओ है, वो सबको ऑब्जर्व करा होगा. तो दिस इज व्हाट गिट इज. अब ये जितनी भी चीजें हैं ये सब आपके लोकल मशीन के ऊपर है. दे आर नॉट ऑन अ इंटरनेट के बाकी लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं. तो मतलब ये सारी चीजें आप मेंटेन कर रहे हैं अपने लोकल उसके ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर. अगर यही सारी चीजें आपको चाहिए, लाइक आपने ऑफिस का सिस्टम अलग है, आपके घर का सिस्टम अलग है, आपने ऑफिस में काम किया है, यू आर एट होम और यू वांट टू एक्सेस दिस ऑल चेंजेस और सारे कोड को, तो फिर आप यू कैन आस्क योर फ्रेंड एट ऑफिस के वो सारी चीजें आपको जिप करे और आपको भेजे. तो दिस इज वेयर अ गिटहब कम्स इन. गिटहब क्या करता है कि वो आपको एक इंटरनेट के ऊपर एक गिटहब रेपोजिटरीज, बेसिकली जो इनका कोड फीचर है वो आपको एक इंटरनेट के ऊपर एक फोल्डर देता है, यू कैन से कि वहां पे आप अपने सारी चीजें अपने सारे कोड्स हो गए, जितनी भी आपकी डेवलपमेंट चीजें हैं और कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वो सब वहां पे आप रख सकते हैं. And when you go to home and at any place in the world, and you can fork that, or you can like definitely fetch that repo to your local machine. So this is what GitHub is. Okay. Second question is how to execute command on GitHub. Which command you are talking about, Muzammil? Like GitHub actions key or whatever. Which program language is used in GitHub? So I guess Git is written in C or C++, but when it's come to like managing the languages or managing the framework, so you can manage any framework or any language that you want. Okay, so if you are having any other question, do let me know in the chat. Meanwhile, let me go to the main topic of our project today. Okay, so sorry. So when you open your GitHub, here are the like modules that you are seeing nowadays. GitHub Copilot, GitHub Universe, which is the event that we just gave a watch of what party. Secondly, GitHub Codespaces. So let me just click the GitHub Codespaces.
एंड आई मेंशन बिफोर कि GitHub कोड स्पेसेस क्या है कि हमारे पास जो VS कोड और github.dev है उसकी एग्जीक्यूटेबल ऑपरेशन हमें प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ये और अच्छा ये हमारे पास कुछ एक फ्रेमवर्क डिपेंडेंट नहीं है, लैंग्वेजेस डिपेंडेंट नहीं है। जो मैंने आपको दिखाया था इनकरेंसी ऐप, ये मेरी एप्लीकेशन मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ, बट आई कैन रियली सी के व्हाट दीज चेंजेस आर एक्चुअली। अगर मुझे इसको रन करना है तो फिर मुझे इसको अपने सिस्टम पे क्लोन करना, फैच करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं इसको अपने लोकल सिस्टम पे रन करूंगा। दिस इज नॉट अलाइव, राइट? और क्योंकि आप इसको सेकेंडली इसका अल्टरनेटिव भी हो सकता है कि आप इसको कमेंट करें, फिर आप इसको गिटहब पेजेस के थ्रू लिंक करवा दें, फिर वहां से आप इसको लाइव देख सकते हैं। लेकिन लाइक दिस इज नॉट अ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, राइट? दिस इज अ प्रोडक्शन जहाँ पे आप अपने एक साथ सारी चीजें पुश करते हैं, उसके बाद यू कैन सी। तो अब मुझे इसको रन करना है ना, तो GitHub कोड स्पेसेस हमें ये फैसिलिटीज देते हैं कि यू कैन रन योर कोड ऑन द ब्राउजर, राइट? तो बिफोर गोइंग टू द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, मैं आपको जस्ट इनके कुछ टेम्पलेट्स दिखाना चाहता हूँ जो कि GitHub ने हमें पहले से प्रोवाइड किए हैं। If I'm going to the see all projects, here is the like all the frameworks that you can use. Like you can start Jupyter notebooks, you can start Express projects, Next.js projects, React, and let me just do it for like I will go start a React project here. I will do a use, click on use, and it is setting up your code spaces here. Sorry. So before meanwhile starting, let me just give you a brief introduction what GitHub code spaces features are available today. So GitHub code spaces, अच्छा जब मुझे फसी ने बोला था कि we are organizing a GitHub code spaces session and you are like supposed to talk about it, so I was thinking at that time कि GitHub code spaces when it's first introduced in the market, it was just available for the enterprises. So I was like literally wondering कि हम लोग किस तरह से इसको मैनेज करेंगे, और क्योंकि I will demonstrate क्योंकि ये enterprises के लिए, but fortunately GitHub code spaces by this GitHub universe is available for any developers who is on the GitHub for 60 hours a month, and for literally free. You can like not supposed to pay anything for a month for a 60 hours, and this is like way more than enough, right? But you just 60 hours है, this is just a brief। ये हम लोग देख लेंगे कि मतलब इसको दूसरी तरीके से किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, बट here is the part. This is faster than your laptop, and this is like a really important thing here. GitHub की जो code spaces है उसके now they are attaching a virtual machine with your GitHub repository, तो उस पे आपको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। Like you can use 2 core, 4 core, octa, hexa, and any core as you want। और जो इसके फ्री वर्जन है उसमें 32 तक अवेलेबल है, बट व्हेन यू गो टू द लाइक प्राइसिंग लिस्ट ऑफ GitHub कोड स्पेसेस, वहां पे आई गेस 32 कोड्स भी अवेलेबल है, बट दे आर नॉट फॉर फ्री। और जो 60 आवर्स है वो हमारे पास सिर्फ 2 कोड के हैं, बाकी जो हमारे अलग है। लेट मी जस्ट फाइंड इट हियर, और इट्स आई एम ओके कोड स्पेसेस प्राइस अब billing for GitHub code, here it is, you can see। पर सर अच्छा इसके साथ वो आपको like obviously they give you a storage as well, और उसके अलावा if you come this over here तो वो आपको चार्ज करेंगे on a type of configuration that you are using। अगर 2 hours के तो वो after 60 hours they will charge you $0.18 for 1 hour, and if you're using like the higher the configuration is, the higher the charges will be। But this is the thing that I was trying to showing you कि 16 के I guess उस पे available है free पे, लेकिन for 32 course you are like definitely supposed to buy a plan, but 30 like 88 core is like octa core is like more than enough, right? So here yeah, so this is a demo environment as I mentioned before, क्योंकि production के ऊपर we can like, इसके अलावा you can
install anything like इसके अलावा अलग अलग एक्सटेंशन you can also use that like live server है ptr है gitlabs है debug हो जावा है dockers है क्योंकि मोस्टली हम लोग जितने भी काम करते हैं वो docker images के ऊपर ही कर रहे होते हैं और क्योंकि CI/CD का पार्ट होता है and also it's give you security but now jump into the project that I was here. In the start, I click on the use this template and it will start the server for me. And here is the अब आप because अगर हम लोग अपने लोकल मशीन के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो वो हमें लोकल होस्ट दे होता है लोकल होस्ट इज लाइक आर आई पी जो हमारे सिस्टम को असाइन होती है IP3 राइट IP4 इज लाइक अ डिफरेंट वर्जन ऑफ द IP तो हमारे लैपटॉप को IP3 असाइन होती है एंड दिस इज यू कैन लाइक राइट योर IP एंड द 147 and now you are wondering कि ये आईपी तो उस मशीन की है ये हमारे सिस्टम पे कैसे रन होगी तो just let me click on this. Now you can see it will redirect me to other tab and it will attach basically the port of this to this random URL and this is my code. अब मैं यहाँ पे for example ये मेरा like development environment है although it's deployed on somewhere but ये जो हमारे पास route है ये basically मुझे redirect कर रहा है मेरी इस virtual environment की port के ऊपर. So for example GitHub Codespaces अब मैं कुछ इस पे directly change करता हूँ. For example I am on a edit. Here you can see it's written headed sr.app.js to save and reload, right? So अब मैं इसको ही change कर देता हूँ. Hello world, which is like so amazing. And if I refresh, hello world. It's just right there. Like अब मुझे कुछ अपने virtual environment के ऊपर डेवलपमेंट कर सकता हूँ मुझे हर एक रैपो के ऊपर आके अपने उसको फोक करने की जरूरत नहीं है कुछ करने की जरूरत नहीं है. Secondly, this is for the template part, right? But most of the time, आप इसको एक बार use करेंगे. Secondly, then you will directly jump into your own project, right? So let's give it a try on our project. First, मैं इसको close कर दूँ because I am also having a 60 hours. And आप इसको just यहाँ से बंद कर दें. And if you come here again, GitHub Codespaces, it will show all the code spaces that you are running. और आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने एक और GitHub Codespaces बनाए थे लेकिन अभी जो मैंने ये है you can set the configuration like you can name it, you can call it like React project or something and it will change into a React project and you can also change a machine type here. Here it is like currently I'm using 4 core but you can switch it to 16 core and you can like update code spaces. Like there are like so many other things that like it's now it feel a little bit overwhelming but with the time you will definitely get into this or it will like become so easy. So this is the one thing that I want to other thing like let's give it a try with our own projects. Okay, so मैं अपने repositories पे आता हूँ and here is the portfolio. Basically this is my own portfolio and it's a repository for that and like if you go asharib.live so here is my portfolio. Okay, so अब मुझे क्या करना पड़ता है अब मेरी कोई भी अचीवमेंट होती है या फिर कोई भी फीचर मेरे पोर्टफोलियो में ऐड होता है तो मैं अप टिल नाउ क्या कर रहा होता हूँ कि मैं क्योंकि दिस इज आई थिंक अ बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा मुझे अपडेट करना पड़ती है ऑन लाइक अ वीक और समथिंग. तो अब मैं क्या करूंगा कि पहले मैं अपने रेपोजिटरी को पूरा फोक करता था उसमें चेंजेस करता था उसको पुश करता था फिर आके उस पे चेंजेस देखता था कि लाइव के ऊपर उसके चेंजेस किस तरह से शो हो रहे हैं. नाउ व्हाट आई विल डू कि आई विल कम टू माय रेपो एंड आई विल अगेन प्रेस अ पॉइंटर की हियर and it will definitely start a GitHub code and if I will read oh sorry
मैंने github.dev खोल लिया, राइट। सो फॉर गिटहब कोड स्पेसेस आप यहाँ पे कोड पे आएंगे, इसके ऊपर कोड स्पेसेस के ऊपर, एंड यू कैन क्रिएट अ कोड स्पेसेस ऑन मास्टर, बिकॉज मैं मास्टर ब्रांच के ऊपर हूँ इसलिए it is asking me, but if you are having multiple branches you can start a code spaces on any branch you want, right? So it is setting up your code spaces within 10 seconds, like if you are having a good internet speed, so it will portray it on your desktop depending on the latency that you are having, but it will literally assign you a virtual machine within 10 seconds. So it's taking time because ये मेरे virtual internet की speed पे depend करता है, बाकी जो latency आ रही है। Meanwhile, it's setting up to let me know if you are having any questions. Okay, so we are having a couple of questions. Okay. Meanwhile, it's okay. It's here. Let me, and it's just started, because then I will go to the session question. Meanwhile, it's building the. Okay, so here's the project, and what I will do, I will open my terminal, do a quick start, like npm start of my project. So meanwhile, starting, let me just answer a few questions that I am seeing on the chat for programming language. If you modify any file and you have saved the file, will it automatically change, modify the repository to, or you have to play the load it again? No, in both the cases, Mohammed Habibullah, in both the cases, like अगर आप GitHub code spaces use कर रहे हैं या फिर आप GitHub.dev use कर रहे हैं, आप उसमें changes करें, आप modification करें, कुछ changes करें या फिर कोई new files add करें, आप उसको वहीं पे उसको comment करें और वहीं से ही मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये किस तरह से होगा, और वहीं से ही आप उसको डायरेक्टली कमेंट करके पुश कर सकते हैं उस ब्रांच को, एंड इट डायरेक्टली ऑटोमेटिकली add the changes to your repository, because आप अपने रेपो पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि जो इसकी स्टोरेज है ना, वो स्टोरेज आपको 36 GB देता है, लेकिन वो फर्स्ट आपकी जो रेपो है वो रेपो को फुल क्लोन करता है अपने पास उस स्टोरेज के ऊपर, और आप अपनी रेपोजिटरी के अंदर चेंजेस कर रहे होते हैं. दिस इज नॉट सम पर्टिकुलर समथिंग एल्स, राइट? व्हाट इज क्लोन? सो ये कुछ गिटहब और गिट की अलग अलग कमांड्स हैं. अब होता है क्या, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने कोई भी मेरी एप्लीकेशन गिव मी अ मिनट, अच्छा ये मैं स्टार्ट हो गई, वैसे मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन फर्स्ट गिव मी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. ये आप क्या करते हैं कि अपने लोकल मशीन के ऊपर आते हैं. अब ये आपकी जो रेपोजिटरी है, अब ये आपके गिटहब के ऊपर है, राइट? अब मैंने आपको बताया था कि जो अगर आप अपने ऑफिस के सिस्टम पे काम कर रहे हैं और आपको वही सारी कोड अपने घर के सिस्टम पे चाहिए, पर्सनल लैपटॉप पे चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि आप उसको आके क्लोन करेंगे. मतलब ये आप इसको ओपन करें, आप इस कोड पे गए या फिर आपने यूआरएल भी कॉपी कर सकते हैं. आपने ये यूआरएल कॉपी करा, आप उसके बाद अपना टर्मिनल खोलेंगे या फिर आप कमांड लाइन खोलेंगे if you are using विंडोज. आप वहां पे लिखेंगे गेट क्लोन और देन स्पेस, और उसके बाद अपने यूआरएल वहां पे पुट कर देंगे, तो वो पूरी रेपोजिटरी आपको क्लोन करके दे देगा आपके सिस्टम के ऊपर. लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने चेंज कर दिया, आपके पास पहले से वो रेपोजिटरी एग्जिस्ट करती है आपके मशीन के ऊपर, और आपने कुछ चेंजेस ऑफिस से किए, फिर आपने उसको गिटहब पे डाल दिए, अब आपको फिर वो चाहिए अपने घर के लैपटॉप के ऊपर, तो आप उसको गेट पुल करेंगे, गेट फैच करेंगे. बेसिकली दे बोथ आर डूइंग द सेम थिंग, बाद में थोड़ा बहुत चेंज होता है. विल डेफिनेटली नॉट गोइंग इनटू दैट राइट नाउ. अपार्ट फ्रॉम इट, व्हाट्स द क्लोन? Cloning mean having a okay if you have to make a project in VS Code, then how we can connect this project to GitHub. Okay, अगर आप अपने this is what I was explaining before कि अगर आप अपने repository पे काम कर रहे हैं, मतलब अपने local उस पे सिस्टम पे काम कर रहे हैं, आपने कोई भी चेंज करें, आपको उसको पहले, अगर आपके पास GitHub डेस्कटॉप नहीं है एंड यू आर यूजिंग टर्मिनल और कमांड लाइन, आप अपनी रेपो के ऊपर आएंगे, सॉरी इसके ऊपर रेपोजिटरीज के ऊपर, एंड देन आपने यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है. आप उसका कुछ भी नाम रखते हैं, फॉर एग्जांपल XYZ और समथिंग, और यहाँ से आप क्रिएट रेपोजिटरीज करेंगे, राइट? अब पब्लिक और प्राइवेट ये बाकी कॉन्फ़िगरेशन है. उसके बाद आपने अपनी जो VS कोड है उसका टर्मिनल खोलना है, और ये सारे कमांड्स वहां पे जाके कॉपी पेस्ट करनी है जस्ट, और वो सारी आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा.
So this is how you can like push your code from your local machine to your GitHub. Okay, then what is the machine IP public? Okay, machines IP public basically ये जो हम लोग बात कर रहे थे इधर जो उसने दिखाया था कि योर पोर्ट इज योर प्रोजेक्ट इज रनिंग ऑन अ पोर्ट लोकल होस्ट स्लैश समथिंग, जो उसकी पोर्ट थी वो उसकी बेसिकली आईपी थी। आईपी यू कैन से कि हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उन सब का एक नेमिंग करना। फॉर एग्जांपल आपको डीएनएस सर्वर्स का अगर नहीं पता तो आपने यहाँ पे आते हैं अपने यूआरएल के ऊपर आपने फॉर एग्जांपल मैंने लिखा asharib.live। अब asharib.live दिस डज नॉट मेक सेंस फॉर द कंप्यूटर और द मशीन, वो नहीं जाता कि asharib.live क्या है। अब हम क्या करते हैं कि इसके बैकएंड के ऊपर हम एक आईपी असाइन कर देते हैं। आईपी क्या है कि वो डीएनएस सर्वर के अंदर जाती है और वो उस पर्टिकुलर एड्रेस को देखती है कि इस एड्रेस पे क्या प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। अब आईपी यूनिक्स होती है। जो हमारे पास पहले थी IP3 वो ऑक्टा वो थी डेसिमल थी, और अब हमारे पास जो IP4 आई है वो हेक्साडेसिमल है। और आईपी पब्लिक यू मीन के लाइक आपकी जो आईपी जो पब्लिकली अवेलेबल हो, लाइक यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर, राइट। Then like I can share the IP with my friend for him to review a website I'm development. Okay, yeah, if you are like for example मैं आपको दिखाता हूँ ये जो मेरी टर्मिनल है, ये मेरे पोर्टफोलियो का वेबसाइट है जो मैं लोकली अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में रन कर रहा हूँ, राइट। अब ये मेरे पास एक उसने रिडायरेक्ट कर देगा मुझे एक यूआरएल के ऊपर। So basically now it's a URL which is attached to some IP, and if I will share it with you folks, so you can like see the changes. So this is somehow right कि आप जो develop कर रहे हो आप now you can like stream or something. Talking about okay, then meeting time. Okay, this is like whole, yeah. This is what your IP like 172 what is sharing. So let's get back to the project that I was running. तो ये मेरा पोर्टफोलियो जो कि मैं चेंजेस करता हूँ, राइट। ये मुझे उसका टर्मिनल है जो मुझे चेंजेस दिखा रहा है, एंड दिस इज लाइक a URL that my changes are directly published through. Okay, so ये जस्ट एक एग्जांपल है जिस तरह हम इसको GitHub.dev को यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन लाइक देयर आर न्यूमेरियस अदर यूटिलाइजेशन ऑफ दीज फीचर्स। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा होता हूँ कि मुझे कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होता है तो मैं उसकी ऑफिशियल पब्लिक रेपोजिटरी पे जाता हूँ और वहां से उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो वो लोग फॉलो कर रहे होते हैं वो कॉपी कर रहा होता हूँ। तो GitHub कोडस्पेसेस है, GitHub dev है, आप वहां पे जाके अपने VS कोड से इजीली उनकी सारी चीजों को देख सकते हैं कि मतलब किस तरह कौन सी चीज किस तरह कनेक्टेड है, वो अपने चीजों को रन करने की या फिर डेवलप करने के लिए क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं इन जस्ट ऑन योर ब्राउजर। आपको वो पूरी रेपोजिटरी क्लोन करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि बहुत सारी रेपोजिटरी मोनो रेपोज होती है। फॉर एग्जाम्पल मतलब मोनो रेपो का मतलब कि एक रेपो के ऊपर एक रेपो के ऊपर 2-3 प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, मतलब फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ चल रहा होता है, तो वो बहुत ज्यादा बड़ी रेपोजिटरीज होती है। तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट था जो मैं आपको डेमोस्ट्रेट करना चाह रहा था। अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अगर मैं स्टॉप ना भी करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने जस्ट डायरेक्टली क्लोज कर दिया, राइट। अब मैं यहाँ पे आऊंगा अपने कोड स्पेसिस के ऊपर और मुझे यहाँ से उसको स्टॉप करना है, तो मैं यहाँ से आके इंस्टेंस को स्टॉप कर सकता हूँ। स्टॉप का मतलब ये है कि मतलब मैंने जहाँ से स्टॉप किया मैं दोबारा प्ले करूंगा तो वो मुझे यही कॉन्फ़िगरेशन यही सब नाम के साथ दोबारा प्ले कर देगा। लेकिन यू कैन ऑल्सो डिलीट दैट। आपने इसको डिलीट कर दिया और आप दोबारा से कोड स्पेसेस स्टार्ट कर सकते हैं मल्टीपल्स। अच्छा, आप इसमें मल्टीपल कोड स्पेसेस भी रन कर सकते हैं, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। So this is what a code spaces is. If you are having any other question, do let me know. Is there any limit for joining view your URL? Sorry. So basically,
लिमिट का आई एम नॉट श्योर, क्योंकि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जस्ट आप डेवलप कर रहे होते हैं और आप देख रहे होते हैं, तो दिस इज आई एम नॉट ट्राइड यट, लेकिन एज पर माय नॉलेज कि वो सबके लिए अवेलेबल होगी, क्योंकि सब पब्लिक यूआरएल राइट, तो यू कैन शेयर इट विद any number of people you want, or it's available for everyone. It should be. I'm not sure, but it should be available for anyone else. Anything else you want to add before we sum up the session? About the code spaces, about anything you want. Like, let me just stop my screen sharing. Yeah. So, like, if you are having any other question, because I am having a limited time, this is why I went really quick. So, but still, if you have any question, do let me know. Otherwise, Vasi, it's up to you now. No more question. Thank you. Thank you. Okay, so like if you're not having any question right now, you can also ping me on my um, Twitter or my LinkedIn, anywhere you want. इसके अलावा भी if you want any other suggestion or something, I am always available for you folks. जो भी चीज हो, you can like directly share it with me. I will definitely be there for you folks. Thank you. From this is all from my side. If first you have something to add, it's over to you. All right, am I audible? Yes, you are. Um, so thank you so much, Asharib, for such an amazing session. And on behalf of Microsoft Learn Students Community UIT, IEEE Key Student Branch, and IEEE UIT Computer Society, I would like to present you this certificate. I hope it is visible on screen. Is it? Yeah, it's visible, and like literally, it's means a lot for me. Thank you for inviting me for this like amazing watch party. Not just this certificate, I would also like to present you LinkedIn Premium voucher, which will be valid for an year. So that's it from our side. पार्टिसिपेंट्स के लिए भी सर्टिफिकेट्स जो हैं वो उनकी ईमेल के ऊपर सेंड कर दिए जाएंगे विद इन अप्रॉक्सीमेटली अ वीक बाय नेक्स्ट सैटरडे। और गिटहब हुडी के लिए जिन पार्टिसिपेंट्स ने जो है वो पूरे थ्रू आउट दिस सेशन कनेक्टेड रहे, हम लोग एक मिनिमम इसका टाइम फ्रेम सेट कर लेते हैं, लाइक आई गेस 1.5 आवर की टोटल मीटिंग थी, तो जो 1 आवर एटलीस्ट कनेक्टेड रहे हैं उनको हम लोग एलिजिबल काउंट कर लेते हैं फॉर द लकी ड्रॉ। सो ऑन दैट नोट लेट्स कंक्लूड द सेशन। अगर अशारिब अपनी कोई ईमेल एड्रेस या फिर कुछ यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के लिए शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के मजीद क्वेश्चन हैं। Sure, I am attaching my website here. Like उसके ऊपर आपको सारे links मिल जाएंगे. If I'm not available on one platform, you can reach me out on the other as well. तो जो भी चीज़ है, you can definitely, and I'm like literally welcome to all of you folks. कि आपको कोई भी support चाहिए regarding the GitHub campus expert program or any other community or any technological stuff, so you can definitely reach me out, and I'm like always welcome for you folks. तो यहाँ पे क्वेश्चन सर्टिफिकेट्स का है, बिल्कुल सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपको आपकी ईमेल के ऊपर जिसके थ्रू आपने रजिस्टर करवाया है उसके ऊपर सेंड कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। वी आर कंक्लूडेड दिस सेशन एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।